Oh, well, hello and welcome to this YouTube session. And in this session, I'm going to take up uh, tips and tricks about IOQM 2025. तो मैं IOQM 2025 के बारे में कुछ बातें करने वाला हूँ. That how to attempt the paper, which part I believe are generally better to attempt first, and various strategies, and how to exploit if at all there is a folly in the problem or if the examiner has not thought through. मतलब अगर एग्जामिनर ने बहुत दिमाग नहीं लगाया है तो आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सो ऑन. बट बिफोर दैट आई बिलीव मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस देने वाला हूँ कि आप कैसे आई ओ क्यू एम 2025 में एक अच्छा कर सकते हैं इनफैक्ट. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सो well, here it is. And as you can see that uh, well, I came 2025 and it says tips and tricks. Well, what you can see is that the first thing which you can see is that 2025 has been written as such. It's been written as 45 square. तो पहले मैंने 2025 को 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है. एंड वेल 45 का स्क्वायर जो होता है वो 2025 है, एंड देन दैट्स आल्सो इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑल द वे अप टू 9 क्यूब. एंड एट दिस स्टेज अगर आप अपने से पूछ रहे कि ये एकाएक से कैसे हो गया, well, then it's not that difficult to think because मुझे ये पता है कि that 1 cube plus 2 cube plus all the way up to n cube is in fact n into n plus 1 by 2 का square, and n into n plus 1 by 2 is in fact simply 1 plus 2 plus 3 plus all the way up to n, right? So well, so what we get is, तो आपके पास आ क्या जाएगा, आपके पास आ ये जाएगा कि that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus all the way up to 9, it's 45. Therefore 2025 is in fact 1 plus 2 plus 3 plus all the way up to 9 जो है इसका स्क्वायर, राइट? ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास. सो दैट्स अबाउट 2025 एंड यू शुड बी डिसअपॉइंटेड अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए जो इस आइडिया को एक्सप्लॉइट करती हो, राइट? Now, straight away, I'm going to dive into the strategy that you're going to use for IOQM 2025. तो सबसे पहले मैं एडवाइस ये करूंगा कि that you should simply go for two markers. Two to tango. There goes a phrase. तो सबसे पहले आप टू मार्कर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. जितना ज़्यादा आप टू मार्कर करेंगे उतना बेहतर. 7 से 8 दो मार्कर्स ट्राई करने की कोशिश करिएगा. एंड दैट सिंपली बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे आई शुड हैव सेंट 10 टू मार्कर्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे टू मार्कर्स आसान ही आते हैं. बट 7 to 8 आर काइंड ऑफ डुएबल, जो एग्जाम टाइम में हो जाते हैं अगर आप ढंग से ट्राई करें. तो दैट्स जनरल ऑब्जर्वेशन. एंड मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो आई क्यू एम 2024 है. IOQM 2023 was considerably difficult and therefore we can't say कि आप 7 से 8 टू मार्कर ट्राई कर ही पाते. इनफैक्ट अगर आपने 8 टू मार्कर ट्राई कर लिए होते IOQM 2023 में तो यू वुड हैव क्वालिफाइड एक्चुअली. जो हाईएस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था किसी भी रीजन के लिए बस फॉर दिल्ली एंड दैट वाज 17 मार्क्स. सो दैट्स दैट, है ना? ओके. जब आपने टू मार्कर 7 से 8 ट्राई कर लिए, देन नेचुरल क्वेश्चन दैट यू विल आस्क योरसेल्फ इज कि फिर क्या ट्राई करना है, 3 मार्कर या 5 मार्कर? तो माय एडवाइस इज दैट गो फॉर 5 मार्कर. सो हाई फाइव. अब जितने आप 5 मार्कर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने 5 मार्कर्स आप अटेम्प्ट करिएगा. जो हाईएस्ट कट ऑफ था वो दिल्ली का था, और दिल्ली का जो हाईएस्ट कट ऑफ था इट वाज अबाउट 36. अगर आपने 8 दो मार्कर ट्राई कर लिए और 4 5 मार्कर्स ट्राई कर लिए, दैट्स अबाउट लास्ट ईयर्स पेपर, यू डन. एग्जाम वहीं पे खत्म हो गया. एंड थिंक अबाउट इट. अगर आप 5 10 अगर 5 मार्कर आते हैं आपके पास, और अगर आप 10 में से 4 आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको पिक करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप पहले 5 में से कोई दो देखिए, नेक्स्ट 5 में से कोई दो देखिए, मतलब कोई भी 4 आप 10 में से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये 4 आपसे 5 मार्कर्स जो है वो तो हो ही जाएंगे, तो वेल वी आर डन. द एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट ओवर. अच्छा, and there is a common misconception that 5 markers are considerably difficult. Some of them actually are. उसमें से कुछ बहुत मुश्किल होते हैं actually. But उनमें से कुछ ऐसे एक्चुअली होते हैं जो अगर आप देखेंगे तो कर लेंगे. लाइक they're actually up for the grabs. कि आपने देखा और कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगाया और कर दिया. तो
आफ्टर 2 मार्कर्स माय एडवाइस वुड बी टू सेलेक्ट 5 मार्कर। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 10 5 मार्कर बैठ के करने लग जाइए, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऑब्वियसली that's absolutely not the case, but the point which I'm trying to make is that if you can select 4 5 markers out of 10, then we're good, and you have done great. And then uh, the third rail means the 3 marker। अच्छा देखो, 3 मार्कर में क्या होता है कि कुछ उसमें से आसान होते हैं, some of them are notoriously difficult actually। 3 मार्कर में सबसे खराब होता है मार्क्स टू टाइम रेशियो एक्चुअली, लाइक लीस्ट होता है एक्चुअली ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेलेक्टिव होइए बट अटेम्प्ट करिए। मतलब व्हाट आई बिलीव यू शुडंट डू इज कि आपने 3 मार्कर सेक्शन ही छोड़ दिया। तो हर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आसान होते हैं इंक्लूडिंग 3 मार्कर। 5 मार्कर में भी इसलिए आसान होते हैं इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स। तो फिर अगर आप 3 मार्कर पे आए और आपने कुछ सेलेक्टिवली प्रॉब्लम देखा और उसको कर दिया, तो वी आर गुड। सो आपने सबसे पहले 2 मार्कर ट्राई किया, फिर 4 5 मार्कर ट्राई करने की कोशिश की, फिर आगे 3 मार्कर पे। अगेन 3 मार्कर आपने सेलेक्ट करके अटेम्प्ट किया है उसको, लाइक आपने ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं, क्रोनोलॉजिकली अटेम्प्ट नहीं किया उसको। तो you'll get a few 3 markers which are nice and which can be solved easily। तो अगर आपने कुछ 3 मार्कर भी सॉल्व कर लिए तो एग्जामिनेशन इज डन। अब बस पॉइंट इस बात की रहती है कि आप कितना स्कोर करेंगे, राइट? ओके, आई एम नॉट सेइंग कि 3 मार्कर छोड़ देना, बट आई एम सेइंग इज कि पहले 2 मार्कर करना है, सेलेक्टिवली 5 मार्कर करना है, फिर सेलेक्टिवली 3 मार्कर करना है। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन। Well, the time is tight and bound is right. What does that mean? What I'm saying is that you should have an upper bound कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं एक 2 मार्कर के लिए, अगर एक 3 मार्कर के लिए, एक 5 मार्कर के लिए। अगर एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स आपसे एक 5 मार्कर होपलेसली आप फंसे हुए एक 5 मार्कर में, तो आई बिलीव दैट इट्स द टाइम दैट यू शुड अबैंडन दैट 5 मार्कर और कुछ और करना चाहिए आपको। सिमिलरली 3 मार्कर के लिए भी कोई एक अपर बाउंड होगा। वो अपर बाउंड क्या है वो आप समझिए। 3 मार्कर के अपर बाउंड क्या है? इज इट 15 मिनट्स, इज इट 12 मिनट्स, इज इट 10 मिनट्स? लाइक दैट यू हैव टू डिसाइड कि भाई इतना हो गया, तो इससे ज्यादा तो आप टाइम नहीं देने वाले हैं। इट शुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। अब 2 मार्कर के लिए अगर आप 6 मिनट 7 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं, तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, बिकॉज द टाइम इज नॉट इन्फिनिट। टाइम इन्फिनिट नहीं है आपके पास, राइट? या सो डिसाइड एन अपर बाउंड फॉर ईच सेक्शन। सारे सेक्शन के लिए अपर बाउंड डिसाइड कीजिए कि भाई 5 मार्कर में आप कितने से ज़्यादा नहीं देंगे। लाइक अगर आप होपलेसली फंसे हुए 5 मार्कर में एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स, आई बिलीव यू शुड ड्रॉप इट। ड्रॉप करिए और आगे बढ़िए, लाइक कुछ और। सेम गोज फॉर 3 मार्कर, सेम गोज फॉर 2 मार्कर। सो गिव टाइम। अब 2 मार्कर के लिए क्या होगा, 5 6 मिनट होगा, है ना? उससे ज़्यादा क्या होगा? 3 मार्कर के लिए 12 मिनट्स 13 मिनट्स होगा। और यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा 2 मार्कर और 3 मार्कर में कि 3 मार्कर के लिए टाइम, मार्क्स टू टाइम रेशियो बहुत कम है। 5 मार्कर के लिए में भी 20 मिनट्स होगा, एंड सो ऑन, राइट? ऑर्डर। सो what will be the order in which you are going to attempt it? किस ऑर्डर में आप इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं? सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि सबसे पहले आप ट्राई करिएगा नंबर थ्योरी, और फिर ट्राई करिएगा कॉम्बिनेटोरिक्स, और फिर ट्राई करिएगा अलजेब्रा, एंड जियोमेट्री लास्ट में ट्राई करिएगा। जियोमेट्री जो बैश करने वाला होता है आईक्यूएम का, इट्स नॉट इंटेलिजेंट, बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होता है। और बहुत निकालना पड़ता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, एंड सो ऑन। अच्छा, एट दिस पॉइंट आई मस्ट से दैट आप अपने कैलकुलेशन को डबल चेक कर लीजिएगा, बिकॉज देर इज टाइम, और आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते उसमें। फाइन। सो या तो जनरली द आइडिया इज दैट जियो जो है, geometry is absolutely beautiful, right? But the question which I'm asking of myself is that is it worth the time? जो ब्यूटीफुल जियोमेट्री है वो आरएमओ की है या इनमो की है? इनफैक्ट आई विल से दैट people who are good at geometry are better off solving those problems from RMO or INMO rather than problems from IOQM। जो IOQM की प्रॉब्लम्स होंगी ना वो मुश्किल होंगी, क्योंकि वो कॉम्पिटेशनल है। और आरएमओ या इनमो में आएगा आपके पास प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, और वो ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ जियोमेट्री है जो इफ नॉट आसान है तो एटलीस्ट ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, एंड देयरफॉर people who are interested in mathematics tend to like those things, right? यहाँ की जो जियो है वो simply bashing है, like go ahead and bash the problem and there is absolutely nothing cerebral about it। Very calculative geo। Number theory is generally
easy. Okay. Now what I'm going to do is that अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग पार्ट्स को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. So for example नंबर थ्योरी. So what I'll say is कि नंबर थ्योरी में कुछ केसेस हैं वो ट्राई करिएगा. एक एक ट्रेंड एग्जामिन करिएगा और आंसर लिख लीजिएगा. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ठीक है. So for example look at this problem. ये जो प्रॉब्लम मैंने दे रखी है this has been taken from number IOQM 2023. तो इस प्रॉब्लम में यू डोंट हैव टू फाइंड A50 स्क्वायर माइनस A49 इंटू A51. नहीं करना है आपको. यू हैव टू फाइंड AN स्क्वायर माइनस AN माइनस 1 इंटू AN प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. एक ट्रेंड ऑब्जर्व करना था और आंसर लिख देना था. फॉर ऑल दोस पीपल हु नो व्हाट अ कैसीनीज आइडेंटिटी इज, जिन लोगों को कैसीनीज आइडेंटिटी के बारे में पता है तो उनको ऑलमोस्ट पता था पहले से कि आंसर क्या आने वाला है. सो फॉर एग्जांपल the story goes like this that हम सात प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे and someone referred to me this problem and then I just said that this is exactly like Cassini's identity and therefore the answer भी ऐसे ही कुछ आना चाहिए. तो अगर आपको पता था कि इसका आंसर क्या आने वाला है तो ठीक है. नहीं भी पता था तो we could have just found out small cases. We could have tried to guess a trend and well write down the answer. That's exactly how Gauss discovered number theory by the way. तो इसमें कोई बुराई नहीं है ये करने में. Right, so that's number theory. Then come to combinatorics. तो combinatorics is shrink it to think it. मतलब जो जनरली कॉम्बिनेटोरिक्स की प्रॉब्लम्स आएगी वो केस वर्क वाली प्रॉब्लम्स आएगी. आइडिया ये होगा कि छोटे केसेस करिए और फिर एक जनरल रिकरेंस बनाइए या जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व करिए और फिर आंसर बता दीजिए. और जनरली जो प्रॉब्लम्स आएगी वो ऐसी आएगी कि आपको केस वर्क करना पड़ेगा. लाइक एक प्रॉब्लम को n नंबर ऑफ केसेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा एंड सो ऑन. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम अगर आपने इसको 14 डिग्री के लिए किया है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अजीब सी लगेगी. छोटे केसेस के लिए आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा एंड perhaps then you will be able to see the wider trend. So that's the thing about combinatorics. Do small work and do case work. That's a general idea. Geometry में I have an advice. Advice ये है कि that carry a geometry box. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो draw the diagram to the scale and measure the side and write it as answer. मतलब जो दे ही रखा है ना exactly measure करके बना दीजिए geometry box से. take a pencil and a scale and a compass. If protractor is allowed then that, and if divider is allowed then that. नहीं भी है तब भी चलेगा. We can always we know how to bisect an angle. uh, so yeah, so अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा geometry में then just draw the diagram to the scale, measure it and report the answer. सो फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम ऐसा कुछ ये दे रखा है. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता यू कैन ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम एंड गेट द आंसर. जनरली जो अच्छा वन मोर थिंग अबाउट ज्योमेट्री इज दैट यू कैन यूज वेक्टर्स. अगर आपको वेक्टर्स पता है और पर्टिकुलरली रेशियो की प्रॉब्लम्स हैं रेशियो निकालने की कि दैट एम इज टू एम एन तो वेक्टर्स और जनरली आंसर आपके पास आ जाएगा. एंड एब्सोल्युटली बैश ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को बैश करना पड़ता है. एटलीस्ट आईओक्यूएम में देयर इज नो अदर वे. राइट. So what I'm saying is, next slide, that also use common sense. I'll say that if the examiner is no, it was not fully in their minds while they were framing question, then you should exercise the loophole. Now, I believe that problems like this are absolutely bad. क्यों bad? Because think about it. A कुछ दे रखा है जो x और y और z पे डिपेंडेंट है. B कुछ दे रखा है जो x और y और z पे डिपेंडेंट है. C दे रखा है जो x और y और z पे डिपेंडेंट है और उसकी वैल्यू पूछ रखी है. कुछ भी नहीं दिया कि एक्स वाई जेड क्या होंगे तो आई जस्ट से दैट से एक्स एंड वाई एंड जेड आर इक्वल. बस दैट्स इट. क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए बी माइनस सी की वैल्यू सेम आनी है तो सबके लिए सेम आएगी. वो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के लिए भी सेम आएगी. राइट. तो ठीक है अगर मैंने एक्स वाई जेड को सेम ले लिया तो ए एंड बी आर गोइंग टू बी 3 ईच एंड सी इज गोइंग टू बी 8. So the answer mod of AB minus C is going to be 1 and we're done. I have absolutely no clue कि ऐसे क्यों दे रखी है प्रॉब्लम यहाँ पे. I believe that it's a fault on the part of the examiner to not to conceive that students can imply means which are not thoroughly legitimate but which will give them the answer, and I wouldn't fault them for this. So I believe that this is more problem for the examiner to think of problems which you will not be able to solve just by implying tricks like which I have. Right. Yeah, so finally I'll say that
फिल एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कोई जो भी अच्छा नंबर है वो भर दीजिए, लाइक 17 भर दीजिए, 30 भर दीजिए, योर एज भर दीजिए, नेबर्स एज, योर फ्रेंड्स एज। मेक एन एजुकेटेड गेस कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड एन अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और नंबर तो भर देना भाई सब में, लाइक दैट्स द थिंग, है ना। तो लाइक देयर इज नथिंग दैट यू शुड लीव। अगर पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वेल आई वुड टेक एनी बेट बिटवीन 90 to 95, या ऐसे कुछ, है ना। ओके, एंड no, so yeah, since we are here, so this is my book. Here it is. You can see print में, and ये नरोसा के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, नरोसा पब्लिकेशन। अभी एटलीस्ट फॉर नाउ इट्स नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन। एंड आप नरोसा के वेबसाइट पे जाएंगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव द परमिशन कि वो वेबसाइट खुल जाए। अब जाएंगे और सर्च टैब में ऑथर का नाम ढूंढेंगे, साद, SAADHASSAN। साद भी आप डालेंगे तब भी ये बुक आ जाएगी। क्लिक करेंगे और अपना पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस डालेंगे, और फिर आप एक कॉपी ऑर्डर कर देंगे। फिर वहां से कुछ प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि दैट आपको कहाँ पे करना है, क्या पे करना है, वगैरह वगैरह, राइट। एंड आई हैव रिटन दिस बुक वेरी पेन्सटेकिंगली, और आई एम होपिंग दैट यू लाइक दिस बुक एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आप देखेंगे कि दैट आपको अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो खुद से पढ़ के और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो आई एम होपिंग दैट इट विल हेल्प यू। Okay, so now, well, I'm just giving you positive vibes, and these are my cats, and well, these cats are just giving you positive vibes. Yes. And I'm going to end this presentation with a poem by Rudyard Kipling. And I'd like you to pause this page and the next page. That if you're going to try, then go all the way, or otherwise don't even start. And if you're going to try, then go all the way. And this could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. But go all the way. And it could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision. It could mean mockery, isolation. Yeah, isolation is a gift. कोई भी अच्छा काम अगर कभी किया गया है तो आइसोलेशन में ही किया गया, आई थिंक। All others are a test of your endurance. So rest everything is a test of your endurance, uh, of how much you really want to do it. And you will do it, despite dejection, rejection, and the worst thought. And it will be better than anything else that you can imagine. So if you're going to try, then I'll say go all the way. Because there is no feeling like that, and you will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. So do it, do it, do it, and do it. All the way, all the way. And you will ride life straight to perfect laughter. It's only good fight there is. All right, so that's all about this presentation. I hope you enjoyed it, and I hope you liked it. And that's all about this.